Hello everyone. It is the 7th today. We are doing inter in which we are going to do linear programming problems. What is a linear programming problem? Because you are a cost accountant and your expertise or your core is going to be costing, there is going to be a lot of things that you do that are going to be core production based. करेक्ट, मतलब आपका कोर वही है ना, क्योंकि अग्रीड अब कॉस्टिंग मेडिकल फील्ड में चला गया है, आईटी में भी चला गया है, सब जगह कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है, बट द कोर ऑफ कॉस्टिंग स्टार्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन, राइट? और जब किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग देन द कॉस्टिंग बिकम्स लाइक अ वेरी बेस सर्फेस लेवल कॉस्टिंग। मतलब बेसिक होता है, उसमें रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल होता है, टेबल कुर्सियां बना रहे हो तो लकड़ी है, पेंट है, एंड मशीन या मैन पावर जो लगता है वो है, दैट्स लाइक द कोर लेवल कॉस्टिंग। Now, when you're talking about production, when you talk about producing anything, if you look at it on a very macro level, not on a micro level, on a very macro level, दो चीजें होती है। नंबर वन इज रॉ मटेरियल एंड द अदर इज लेबर। अगर किसी भी प्रोडक्शन को देख लो, कोई भी चीज, शर्ट बनाना हो, बेंचेस बनाने हो, शर्ट बनाना हो तो रॉ मटेरियल विच इज कपड़ा, एंड देन लेबर है विच इज आइदर लेबर मशीन पे काम करेगा या खुद काम करेगा विदाउट एनी मशीन मैन्युअली। बेंचेस बनाना है, बेंचेस बनाना है तो लकड़ी है, मेटल है, दिस इज योर रॉ मटेरियल, एंड देन लेबर काम करेगा, या तो मशीन पे काम करेगा या लेबर खुद फिजिकली मैन्युअली काम करेगा, दैट्स द कोर ऑफ इट। जब प्रोडक्शन की बात आती है, एंड वाई आर वी प्रोड्यूसिंग, बेसिकली इज टू मेक मनी, पैसा बनाना इसीलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोड्यूसिंग समथिंग, हम प्रोडक्शन जो करते हैं ना वो किसी कुछ चीजों का मोहताज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का मोहताज होता है। कैन आई हैव एनी अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट आई वांट टू? मे बी यस, है आपके पास पैसा, रॉ मटेरियल तुम मुझसे 10,000 किलो मांगे मैं दे दूंगा, बट हमारे पास ह्यूमन लेबर अवेलेबल होता है क्या अनलिमिटेड? नॉट नेसेसरीली, देयर इज अ लिमिटेशन टू ह्यूमन लेबर। तो होता क्या है पता है प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में होता यह है कि कल को अगर मैं आपको बोलूं कि मे बी लेट्स से आई वांट टू प्रोड्यूस टेबल्स एंड चेयर्स, तो अब ये टेबल एंड चेयर क्यों बना रहे हो? सर प्रॉफिट मिले। ग्रेट, अच्छी बात है। कितना मिलता है एक टेबल से प्रॉफिट? सर एक टेबल ना कम से कम 300 रुपए का प्रॉफिट देता है, और कुर्सी कुर्सी 100 रुपए का प्रॉफिट देती है। ग्रेट। तो अगर तेरा टेबल 300 का प्रॉफिट देता है, कुर्सी 100 रुपए की प्रॉफिट देती है, तो एक काम करना, बना दे। क्या बना दे पता है? बना दे 500 टेबल बना दे एंड 1000 चेयर्स बना दे। Well, the moment I tell you 500 चेयर बना दे, 500 टेबल बना दे, 1000 चेयर बना दे, you as a producer, next question will be कहां से ये टेबल और चेयर जो बनानी है ना, इसके लिए रिसोर्सेज लगती हैं। आई नीड टू चेक 500 टेबल की रिसोर्सेज मेरे पास है क्या, आई नीड टू चेक 1000 चेयर की रिसोर्सेज मेरे पास है क्या। है तो मैं बना सकता हूं। इफ यू आर अ रेस्टोरेंट ओनर और इफ यू आर अ केटरर ऑफ सम सॉर्ट, कोई आ गया और बोल दिया शादी है मेरी, आई वॉन्ट यू टू केटर फॉर मी, तो आप बोलोगे ठीक है, आपका एक नंबर बता दीजिए, 50,000 लोग। बोलोगे 50,000 लोग के लिए मैं केटर नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड 50,000 लोग विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर मी, बट जस्ट बिकॉज इट्स वेरी हाई प्रॉफिट आई कांट टेक एन ऑर्डर जो मेरी औकात में ही नहीं बैठता। ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मेरे पास रॉ मटेरियल है, ना मेरे पास लेबर है जो उतने लोगों को केटर कर सकता है। तो डू यू रियलाइज कि प्रॉफिट कमाना है ना तो बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन आप रैंडमली नहीं कर सकते। वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन विल बी लिमिटेड बाय रिसोर्सेज। सो वेन एवर यू आर इन एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन, आपके पास प्रोड्यूस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर आपके पास रिसोर्सेज हैं क्या इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मुझे क्या करना है पता है? मुझे प्रोडक्शन करना है इन सच अ वे दैट नंबर वन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, एंड नंबर टू मेरी जितनी रिसोर्सेज हैं वो उतने लिमिट में ही यूज हो जाए। तो दो चीजें, मैं कितनी टेबल बनाऊंगा और कितने चेयर बनाऊंगा ये पता करने के लिए मेरा प्रॉफिट बोलेगा जितना ज्यादा बनाएगा उतना अच्छा है, बट मेरी रिसोर्सेज बोलेंगे रुक जरा, तू जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा नहीं बना सकता, रिसोर्सेज उसके पे एक कैपिंग लगा देंगे। तो प्रॉफिट बोलेगा ज्यादा बना, रिसोर्सेज बोलेगा उतना रिसोर्स है नहीं, तू कम बना। यू नो व्हाट आई वांट टू डू? आई वांट टू मीट देम समवेयर इन द मिडिल।
आई वॉन्ट टू मीट देम एट द स्वीट स्पॉट जहां पे मेरी रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज हो रही है एंड एट द सेम टाइम मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो रहा है. एंड दैट ब्यूटी इज अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स कॉल्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. A linear programming problem will convert this practical situation or a practical dilemma into a mathematical problem. और वो बोलेगा इसको मैथ में डाल, मैं मैथ में करके दे देता हूं. अब ये छोड़ के रिसोर्सेज की भी जब बात होती है, फॉर एग्जांपल ये तो हमने प्रॉफिट की बात की. व्हेन यू टॉक अबाउट रिसोर्सेज, अब क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें? लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्स नंबर 1. कैन आई से मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत है. अब देखो, टेबल हो या कुर्सी हो, ऑब्जेक्ट अलग अलग है पर रॉ मटेरियल वही है ना. करेक्ट. लकड़ी लेबर वही है. बराबर. तो अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं विच इज लकड़ी, तो टेबल बोलेगा कि अगर तुझे टेबल बनाना है तुझे कम से कम 4 फीट का लकड़ी का प्लाई चाहिए. और चेयर बनाना हो तो वही 3 फीट का चाहिए. करेक्ट. तो अब एलपीपी इज सो इंटेलिजेंट कि एलपीपी बोलेगा देख बॉस, अगर गिवन अ चॉइस 4 फीट में 300 का प्रॉफिट हो रहा है और 3 फीट में 100 का, एलपीपी बोलेगा कि तू क्या कर, तू टेबल बना, चेयर मत बना. इज सो इंटेलिजेंट टू टेल यू दैट. कल को अगर आपने एलपीपी को बोल दिया, लेट्स से लेट मी चेंज दिस, लेट्स से ये 200 रुपया है. कल को आपने एलपीपी को बोल दिया देख मेरे पास ना लकड़ी बची है, कितनी बची है? 6 फीट की. तो बता जरा क्या बनाऊं. तो एलपीपी ऑटोमेटिकली क्या करेगा पता है? एलपीपी बोले ठीक है एक टेबल बना. तो वो आप बोलोगे ठीक है एक टेबल बनाऊंगा तो 6 फीट, 4 फीट की लकड़ी यूज कर लूंगा, 2 फीट वेस्ट हो जाएगी. क्यों वेस्ट होगी? क्योंकि 2 फीट में ना टेबल बनेगा ना चेयर बनेगा वापस. प्रॉफिट कितने का होगा इसमें? प्रॉफिट होगा 300 रुपए का. बट एलपीपी इमीडिएटली कैलकुलेट क्या करेगा पता है? एलपीपी बोलेगा अगर इसी 6 फीट का ना मैं 2 कुर्सियां बना दूं, 6 फीट का 6 फीट पूरा लकड़ी यूज हो जाएगा एंड मैं 2 कुर्सियों का 400 रुपया प्रॉफिट कर सकता हूं. नो इमेजिन आई एम डूइंग दिस ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. LPP will do this for you on a bigger scale. And any amalgamations of problems that you have. यही अगर 7 फीट लकड़ी बचती ना, you know what LPP would have said? 2 टेबल तो तू बना नहीं सकता. सिर्फ एक टेबल बनाएगा तो 3 फीट लकड़ी वेस्ट हो जाएगी. 2 चेयर बनाएगा तो 1 फीट लकड़ी वेस्ट हो जाएगी. तो एक काम कर, तू एक टेबल एक चेयर बना, जिससे क्या हो जाएगा? लकड़ी पूरी यूज हो जाएगी, रिसोर्स कोई वेस्ट नहीं होगी. And one table will give you a profit of 300, one chair will give you a profit of 200, you will make a profit of 500. And that beauty is what LPP does for you. It does all these amalgamations. What combination, which in LPP we called a product mix. What mix of the two products? दो चीजें करेंगे. क्या दो चीजें? नंबर 1, रिसोर्स अच्छे से यूज हो जानी चाहिए, रिसोर्स वेस्ट होनी चाहिए. एट द सेम टाइम प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. एलपीपी विल हेल्प यू डू दिस एंड अंडरस्टैंड. और अगर मैं अब ये बढ़ाते जाऊं ना एक के बाद एक, व्हाट इफ आई गिव हिम 8 फीट ऑफ वुड, तो एलपीपी ऑब्वियसली बोलेगा क्या कर, तू 2 टेबल ही बना. 2 टेबल बनाएगा तो 600 रुपए का प्रॉफिट है. व्हाट इफ मैं चेयर्स बनाऊं? तू चेयर्स बना सकता है पर तू अगर 3 फीट लकड़ी लगती है तो तू 2 ही चेयर बना सकता है एंड एक और फीट वेस्ट हो जाएगा. सॉरी, 2 और फीट वेस्ट हो जाएगा. और प्रॉफिट कितने का बनेगा? सिर्फ 400 का. फाइन. व्हाट इफ आई हैव 9 फीट ऑफ वुड? नाउ दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. 9 फीट ऑफ वुड से तू 3 कुर्सियां बना सकता है, बट 3 कुर्सियां बनाएगा तो 600 रुपए का प्रॉफिट. बट व्हाट इफ आई ट्राई अ कॉम्बिनेशन? व्हाट इफ आई से चल 2 टेबल बनाते, तो 2 टेबल बनाऊंगा तो 800 फीट यूज हो जाएगा. 8 फीट सॉरी, तो 1 फीट बचेगा, बट प्रॉफिट फिर भी 600 का ही बनेगा ना. व्हाट इफ आई मेक 1 टेबल एंड ट्राई टू मेक 2 चेयर्स? एलपीपी विल डू ऑल दैट फॉर यू. एलपीपी विल डू ऑल दीज अमलगमेशंस फॉर यू, जिससे क्या होगा? आपकी जो रिसोर्स है कि कल को आप बोल दोगे देख ये करना है बट टोटल प्लाईवुड अवेलेबल ना मेरे पास सिर्फ 100 फीट है, तो 100 फीट ऑफ प्लाईवुड में कितनी टेबल बनाऊं, कितनी चेयर बनाऊं, जिससे 100 फीट में कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए. नो इमेजिन मैंने एक रिसोर्स ऐड की है. व्हाट इफ आई ऐड अनदर रिसोर्स एंड आई से लेबर, और मैं बोल दूं टेबल पे लेबर लगता है 3 घंटे का, चेयर पे लेबर लगता है
1 घंटे का, और मेरे पास लेबर अवेलेबल है 1 महीने में फॉर अ टोटल ऑफ 200 आवर्स, एलपीपी विल फिल्टर इन द फैक्ट दैट एक टेबल को 4 फीट लकड़ी, एक चेयर को 3 फीट लकड़ी, एंड टोटल लकड़ी अवेलेबल इज 100 फीट। एक टेबल को 3 घंटे, एक चेयर को 1 घंटा, एंड टोटल आवर्स इज 200। एलपीपी इज सो इंटेलिजेंट दैट इट विल मेक श्योर कि ना 1 फीट लकड़ी वेस्ट हो, ना 1 घंटा लेबर, ये करके टेबल और चेयर बने जिससे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। And that is how a linear programming problem will convert a practical issue into a mathematical problem. At your level, what they ask is the formulation. बस बोल देते हैं ये एलपीपी है, इसको क्या करके दे दो, फॉर्मुलेट करके दे दो. So at your level, what we are going to do for now is only and only formulation. A formulation में दो पार्ट है. दो part is, one is the sheet that I have put in the JKC material, and the other sheet is your institute material. But if you look at the questions that they are asking, they are very basic, they are very simple. If you ask me, free का 5 mark है अगर आ गया तो. And why I am stressing all the more now is क्योंकि पूछा ना 2 या 3 अटेम्प्ट पहले था, तो और 2 या 3 अटेम्प्ट पहले है और नए सिलेबस में पूछा है तो फ्रेश है. मतलब एक तो फ्रेश है प्लस पूछा नहीं है बहुत टाइम से, तो अचानक से पूछ सकते हैं. Is this clear to everyone? Shall we? So, I am going to solve the first question. I am going to read the question. What I want you to do is sit back, understand the question, understand the various aspects of it. एक दो question मैं करने के बाद, what we will do is, we will then go back to you all trying a question and then me doing it for you. Can I? आ जाओ. Let's read through what does an LPP sound like. Let's read through what all you need to focus on and how do you go about an linear programming problem. Step 1. Read the problem through and through. No interpretation, nothing. Bas pad lo. So, to begin with, we are going to start saying Disha should wind up early. Chalo. A factory manufactures 2 articles X and Y. तो एक फैक्ट्री 2 आर्टिकल मैन्युफैक्चर करती है, एक है X और दूसरा है Y. तो जैसे पता मैंने बोला था टेबल एंड चेयर, वैसे यहाँ X and Y. To manufacture an article X, a certain machine has to work for 2.5 hours, and in addition, a craftsman has to work for 1.5 hours. To manufacture the article Y, a machine has to work for 1.5 hours, and in addition, a craftsman has to work for 2 hours. In a week, the factory can avail 80 hours of machine time and 70 hours of craftsman time. The profit per article X is rupees 100 and per article Y is rupees 150. Construct the problem to maximize your profit. Correct? You will go back and now read again, but dissect it one line at a time. A factory manufactures 2 articles X and Y. ये कुछ भी हो सकता है. This could be tables and chairs. This could be shirts and trousers. This could be jackets. This could be benches and chairs. Could be anything. 2 आर्टिकल बनाते हैं ना. Obviously same industry होगी तो कुछ सेम बनाते होंगे. ये नहीं कि शर्ट और बेंचेस बनाते होंगे. That is not going to be possible. क्योंकि रिसोर्सेज सेम है तो आर्टिकल कोर में सेम ही होगा. फर्नीचर होगा, ऐसा कुछ होगा. The manufacture of article X, a certain machine has to work for 2.5 hours, and in addition, a craftsman has to work for 1.5 hours. तो अगर आपको मशीन आर्टिकल X बनाना है तो 2 रिसोर्सेज की जरूरत है. What are the resources? मशीन को काम करना पड़ेगा 2.5 घंटे के लिए, एंड क्राफ्ट्समैन को काम करना पड़ेगा 1.5 घंटे के लिए. करेक्ट? To manufacture the article Y, machine has to work for 1.5 hours, and in addition, a craftsman has to work for 2 hours. What do you want from me? In a week, the factory can avail 80 hours of machine time and 70 hours of craftsman time. ये क्या बोल रहा है? देख बॉस, तुझे जो भी बनाना है मैं समझ सकता हूँ,
पर मेरे पास ना टोटल कितना है टाइम, 80 घंटा। 80 से ज्यादा मांगना मत। एंड दिस वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन। क्या आप वेडिंग प्लानर हो, आप वेडिंग प्लान कर सकते हो, जितने ज्यादा गेस्ट उतना अच्छा, क्योंकि उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो कर दोगे 50 लाख लोगों की गेस्ट लिस्ट की शादी? नहीं कर सकता सर, मेरा एक लिमिटेशन है। दैट्स नॉट द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट आई हैव। एंड 70 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। तो कुछ भी बनाओ, जो चाहिए वो बनाओ, मेरे क्राफ्ट्समैन को कैसे भी यूज कर लो, पर मेरे क्राफ्ट्समैन को आप 70 घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। The profit per article X is rupees 150 and per article Y is 150 or is 100 and 150. Construct the problem to maximize your profit. Step 1 to solving an LPP is drawing a table. पहले टेबल ड्रॉ करोगे, टेबल में चीजें इनपुट करोगे और फिर ही उसको कंस्ट्रक्ट करोगे। बिना टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करना, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। और आगे आगे अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो और भी डिफिकल्ट हो जाए। तो टू बी एबल टू सॉल्व एन एलपीपी, स्टेप 1 इज गोइंग टू बी ड्रॉइंग अ टेबल। टेबल ड्रॉ कर लो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। सो व्हेन आई स्टार्ट ड्रॉइंग अ टेबल, उस टेबल में जाएगा क्या क्या। रिमेंबर वी स्पोक अबाउट टू थिंग्स, कि जब एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का सवाल आता है, वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंटली टू थिंग्स, एंड दैट इज नंबर वन, व्हाट इज इट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, मतलब वो क्या चीज है जो प्रोड्यूस कर रहे हो। एंड डू यू अग्री ये वो चीज है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं जो मुझे प्रॉफिट देती है, करेक्ट। तो जो मुझे प्रॉफिट देती है वो मुझे डिसाइड करना है कितनी बनानी है, देन दैट बिकम्स माय वेरिएबल। वही है ना, वही डिसाइड करना है ना कि एक्स कितना बनाना है, वाई कितना बनाना है, देन एक्स एंड वाई बिकम माय वेरिएबल्स। इस प्रोडक्शन को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है? कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? नंबर वन, मशीन टाइम, एंड नंबर टू, लेबर टाइम या क्राफ्ट्समैन टाइम। ये बन जाते हैं मेरे कंस्ट्रेंट्स। तो मैं जो प्रोड्यूस करने की सोच रहा हूं आर माय वेरिएबल्स, और उस प्रोडक्शन को जो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लिमिटेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आर माय कंस्ट्रेंट्स। ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट डाउन योर कंस्ट्रेंट्स वर्टिकली एंड योर वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टली। अब मेरे क्या क्या वेरिएबल्स हैं? माय वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। व्हाट आर माय constraints? My constraints are number one, machine time, and number two, craftsman time. ये है मेरे वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट्स। सो स्टेप वन, हम लिखेंगे वेरिएबल्स को हॉरिजॉन्टली एंड कंस्ट्रेंट्स को वर्टिकली, दैट इज मशीन टाइम, क्राफ्ट्समैन टाइम। लिख के हो गया? गो बैक टू द टॉप, start reading the question again, but now this time start filling the table up. A factory manufactures two articles X and Y. Great. To manufacture article X, a certain machine has to work for 2.5 hours. X machine 2.5 hours. तो X के machine time पे 2.5. And in addition, a craftsman has to work for 1.5 hours. वही X बनाने के लिए क्राफ्ट्समैन को काम करना पड़ता है 1.5 घंटे के लिए। To manufacture the article Y, a machine has to work for 1.5 hours. Y बनाने के लिए मशीन को काम करना पड़ेगा for 1.5 hours. And in addition, a craftsman has to work for 2 hours. Craftsman को 2 घंटे के लिए काम करना पड़ेगा। डन, टेबल भर गया। In a week, the craftsman, the factory can avail 80 hours of machine time. तो मेरे पास मशीन टाइम टोटल है कितना? 80 आवर्स। 80 आवर्स के ऊपर एक भी घंटा नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो मशीन टाइम है, ये एक्स के लिए 80 आवर्स अवेलेबल है या वाई के लिए? दोनों मिला के 80 ना। ये नहीं है कि इसमें तू सिर्फ एक्स बना सकता है सिर्फ वाई, दोनों मिला के 80 है। अब तुझे जो करना है वो कर।
फॉर एग्जाम्पल घर पे चावल कितना है, 2 किलो। तुझे क्या करना है, मुझे बिरयानी भी बनानी है और सादा चावल भी बनाना है। 2 किलो चावल है, चाहिए तो तू पूरे 2 किलो का, बस तू पूरे 2 किलो का बिरयानी बना, पूरे 2 किलो का सादा चावल बना, या तू 1 किलो का, ये 1 किलो का वो कर, कुछ भी कर, टोटल कितना है। विच मीन्स ये जो मशीन टाइम है ना, ये ना एक्स का है वाई का है, ये है टोटल अवेलेबल इज 80 hours and 70 hours of craftsman time. Craftsman का टाइम 70 hours. Done. The profit per article X is rupees 100 and Y is rupees 150. दोनों का प्रॉफिट दिया है 100 and 150. Then we will go to a new row and write down profit. What are the profits? Rupees 100 and rupees 150. This is it. This is a linear programming problem. ये हो गया ना? You are done. ऑलमोस्ट 90% डन। अब बस इसको फॉर्मुलेट करना है। इज दैट अंडरस्टूड? स्टेप 1, आपके वेरिएबल्स क्या और कंस्ट्रेंट्स क्या है समझ लो। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स वो चीज है जो मुझे डिसाइड करनी है कि कितना बनाना। कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स वो चीज है दैट आर माय रिसोर्सेज जो इस प्रोडक्शन को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, इन समय कंस्ट्रेंट रखते हैं इन समय। वेरिएबल्स को हॉरिजॉन्टली लिख दो, कंस्ट्रेंट्स को वर्टिकली लिख दो। वेरिएबल्स को हॉरिजॉन्टली लिख के, कंस्ट्रेंट्स को वर्टिकली लिख के टेबल भर दो। टेबल भरने के बाद नीचे प्रॉफिट लिख देना, टोटल अवेलेबिलिटी लिख देना, एंड यू आर डन। वी नाउ स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। हाउ विल वी स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम? अब इसके बाद ना हम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बोल के सर वेरिएबल्स क्यों, या तो ऑलरेडी बोला है ना एक्स एंड वाई। हाँ, बट उनके हिसाब से x इज एन आर्टिकल, y इज एन आर्टिकल। व्हाट इफ x की जगह टेबल्स लिखते हैं, y की जगह चेयर्स लिखते हैं? तो हमें बताना पड़ेगा ना कि मैं टेबल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या मैं चेयर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वी आर गोइंग टू से लेट अस प्रोड्यूस x यूनिट्स ऑफ, क्या बुला रहे हैं वो उसको, आर्टिकल ऑफ आर्टिकल x एंड y, छोटा y, यूनिट्स ऑफ आर्टिकल y। हो गया? तो नाउ वी बिगिन। यहां पे फिर पेंसिल से हल्का सा x के जगह पे छोटा x, y के जगह पे छोटा y। डन। वी विल नाउ स्टार्ट राइटिंग। वी विल नाउ स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग। करेक्ट? हाउ विल बी फॉर्मुलेट दिस? मुझे करना क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हर एक एलपीपी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ एज अ प्रोड्यूसर? मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट ना। तो मुझे इस प्रॉफिट को ज्यादा रखना है, कम रखना है? So I will always start with my objective function. And what is my objective function? My objective function is an equation represented by z. What is z? Z is I have to maximize my profit. अब प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको? मेरा प्रॉफिट है, अगर मैं एक एक्स बनाता हूं तो 100 रुपए, दो बनाता हूं तो 200, तीन बनाता हूं तो 300। फिलहाल मैं कितनी बनाने की सोच रहा हूं? x. So I'm going to say my objective function is to maximize my profit z। और ये प्रॉफिट z कहां से आता है? By producing x units of x, I will make a profit of 100x, and by making y units of y, I will make 150y। दोनों ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये प्रॉफिट मुझे जितना हाई रख सकूं उतना हाई रखना है। आई विल मैक्सिमाइज दिस, बट इस मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम है। व्हाट डू मीन बाय प्रॉब्लम? बना दो ना। क्या बना दो? आपको मैक्सिमम चाहिए ना, बना दो। 100 चेयर 100 टेबल बना दो, या 100 एक्स 100 वाई बना दो। यू नो व्हाट विल हैपन अगर मैं 100 एक्स और 100 वाई बनाऊं? 100 एक्स बनाऊं ना तो ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। 100 वाई बनाओ तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों मिला के प्रॉफिट कितना होगा? 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रेट। बट एक मिनट, अगर आप 100 एक्स और 100 वाई बनाते हो ना, आपको मशीन पे कितना टाइम लगेगा पता है? एक्स बनाने के लिए 250 घंटे, वाई बनाने के लिए 150 घंटे। टोटल टाइम कितना मांग रहे हो?
400 घंटे है आपके पास, तो ये कौन फिल्टर इन करेगा? ये भी तो फिल्टर इन करना पड़ेगा ना। तो अग्रीड प्रॉफिट को मैक्सिमम रखना है दोस्त, बट प्रॉफिट को मैक्सिमम रखना है अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. So we are going to say that my objective is to maximize the profit, but this maximization of profit is subject to constraints. And what are the constraints? Constraint number one is मशीन पे एक एक्स बनाने के लिए 2.5 घंटा लगता है, तो 2 बनाने के लिए 5, 3 बनाने के लिए 7.5, 4 बनाने के लिए 10 एंड सो ऑन. मैं कितने बना रहा हूं? एक्स. तो एक्स बनाने के लिए मशीन पे टोटल टाइम कितना लगेगा? 2.5 एक्स. ग्रेट. वाई बनाने के लिए 1.5 वाई. तो एक्स और वाई दोनों टोटल जब बनाऊंगा मैं, तो ये टोटल 2.5x प्लस 1.5 वाई हो जाएगा. ये टोटल कितनी अवेलेबल है मेरे पास? आई हैव ओनली अ टोटल ऑफ 80 आवर्स अवेलेबल. इफ आई हैव अ टोटल ऑफ 80 आवर्स अवेलेबल, कैन आई से ये टोटल 80 हो सकती है? करेक्ट. तो कैन आई से दिस हैज टू बी इक्वल टू 80. बराबर. लेट्स कम टू द सेकंड. क्राफ्ट्समैन टाइम. क्राफ्ट्समैन टाइम एक एक्स बनाने के लिए 1.5, एक वाई बनाने के लिए 2. तो कहना चाहिए टोटल क्राफ्ट्समैन टाइम है. ये टोटल कितना होना चाहिए? 70. यहां तक एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? श्योर? क्लियर? क्योंकि ये थोड़ा सा गलत है. क्या ना? एनीबडी एनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस? नो. लेट्स गो बैक टू माय बिरयानी एंड चावल एग्जाम्पल. 2 किलो चावल है. करेक्ट. बिरयानी बना सकते हो, सादा चावल बना सकते हो. टोटल कितना चावल है? 2 किलो. तो कुछ भी मांगो, 2 किलो से ज्यादा नहीं दे रहा. और कल को आप बोलोगे कि नहीं सर 1 किलो की बिरयानी बना रहा हूं, आधे किलो का सादा चावल बना. इज दैट अ प्रॉब्लम? जबरदस्ती है क्या? 2 किलो तो सब यूज कर. नहीं ना. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस. एक दिन में 24 घंटे आपके पास, कितने घंटे सो सकते हो? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट? एक बार एग्जाम लिख दोगे, थके हारे आओगे घर पे लास्ट पेपर के बाद, और बोलोगे खत्म है आज, 24 घंटा मेरे से कोई बात मत करना. आई एम टेकिंग अ नैप, रियली रियली लॉन्ग नैप. ग्रेट. सो जाओ 24 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ काम नहीं है. गो अहेड, स्लीप, lay on the bed and stare into oblivion for 24 hours. Absolutely no problem. बट जबरदस्ती है क्या 24 घंटा ही सोना है? नहीं ना. अगर आप बोलेंगे नहीं सर मैं 12 घंटे सो रहा हूँ, 12 घंटे कुछ और करो, इज दैट ओके? यस. अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं 16 घंटे सो जाओ, नहीं सर मुझे 4 ही घंटा सोना है, नो प्रॉब्लम. विल यू एवर आस्क मी फॉर 1 extra hour एंड से सर मैं 25 घंटा सो लेता? ये नहीं चले. 25वां घंटा मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं तुझे? मैं तुझे दे सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे. 24 घंटे में जो हो सके कर ले. एग्जैक्टली बाय दैट वी मीन मेरे पास 80 घंटे का मशीन टाइम है. बराबर. 80 घंटे यूज करूं चलेगा? हाँ. सर व्हाट इफ मुझे सिर्फ 75 आवर्स चाहिए? कोई बात नहीं, यूज कर ले. सर व्हाट इफ मुझे सिर्फ 70 चाहिए? नो प्रॉब्लम, यूज कर ले. व्हाट इफ सर मुझे यूज ही नहीं करना है? मत यूज कर. बट व्हाट इफ समबडी सेज सर 81 आवर्स की जरूरत पड़ी, वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं दूंगा. इट मीन्स दैट ये जो आप यूज करने वाले हो ना, मशीन टाइम, लेबर टाइम, जो भी है, ये 80 तक यूज कर सकते. 80 से ज्यादा नहीं चलेगा. 80 से कम चलेगा? यस. एंड दिस इज वेयर दिस कंस्ट्रेंट इज नॉट एन इक्वालिटी, इट इज एन inequality that says 2.5x plus 1.5y should be less than or equal to 80. 80 से ज्यादा मत मांगना. करेक्ट. रोटियां कितनी बनी है घर में? 4. कितनी खा सकता हूं? चारों की चारों खा ले. 2 खानी है 2 खा. मुझे नहीं खाना, खाना है मत खा. मुझे 5 रोटी चाहिए, नहीं मिलेगी. 4 है, उसमें कुछ होगा तो एडजस्ट कर लेना. 5वीं मत मांग. एनीथिंग लेसर देन 4 ग्रेट, 4 ग्रेट, मोर देन 4 नॉट अलाउड. सो सिमिलरली द क्राफ्ट्समैन टाइम ऑल्सो कैन बी यूज्ड अप टिल 70. एनीथिंग ओवर 70 इज नॉट अलाउड. अब बताना पड़ेगा ये किसका कंस्ट्रेंट है. तो कैन आई से दिस इज मशीन टाइम अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट, एंड दिस इज क्राफ्ट्समैन बोला है ना,
craftsman, time, availability, constraint. Is this clear, everyone? Let's come to one last bit and wrap this up. आपने बोला मुझे प्रॉफिट जितना हाई चाहिए रखो, ग्रेट, बट फिर हाई रखने के लिए इतना याद रखना इससे ऊपर नहीं जाए, क्योंकि तू एक्स और वाई इतना हाई ले लेगा कि 80 क्रॉस कर रहा है तो वो नहीं चलेगा। तुझे ये हाई रखना है अंडरस्टैंडिंग दैट ये इस दायरे में होना चाहिए, दैट आई अंडरस्टैंड। बट आपने क्या किया पता, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर, ठीक है? अब मैथमेटिक्स इज नॉट दैट इंटेलिजेंट, इट इज इंटेलिजेंट बट नॉट दैट इंटेलिजेंट। व्हाई एम आई सेइंग इट इज नॉट दैट इंटेलिजेंट? बिकॉज़ इट इज एज इंटेलिजेंट एज यू आस्क इट टू बी। नहीं तो वो अपना लॉजिक लगाता है। अब अपना लॉजिक कैसे लगाएगा मैं बताता हूँ। आप बोल रहे हो ना कि ये 80 में ही रखना है, कीपिंग द प्रॉफिट मैक्सिमम, करेक्ट? आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन वेर ये 80 में ही रहेगा। कैन आई? यस, आई एम गोइंग टू से ये जो टेबल्स बनाने ना तुझे, ये 100 बनाओ, तो कितना यूज होगा? 150 आवर्स यूज होगा। चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। एवरीबडी अग्रीज? 100% श्योर? एवरीबडी हैज एनीथिंग टू से अदरवाइज? नो? कैन आई? बट व्हाट इफ आई नाउ टेल यू कि जो टेबल बनाएगा ना तू, ये टेबल -40 बनाना। -40 टेबल बनेंगे तो 2.5 इंटू 40 कितना आता है? 2.5 इंटू 40, कैन समबडी डू दैट फॉर मी? तो कहने से ये -100 हो गया। व्हाट इज -100 प्लस 150? 50 चलेगा नहीं चलेगा? एक्सक्यूज मी, चलेगा या नहीं चलेगा? टोटल 80 से कम आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? तो मैथ तो बोलेगा। तूने क्या बोला? टोटल 80 से कम रखनी है। अब टोटल 80 से कम रखने के लिए x -40 नहीं चलेगा, ये थोड़ी ना तूने बोला। मैंने ले लिया, मेरे इस कॉम्बिनेशन में ये बैठता है, और बैठता है या नहीं बैठता? आपको उसमें मैथमेटिकली आपने उसको क्या बोला, देख ये टोटल 80 से कम होनी चाहिए फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ x बीइंग -40 एंड y बीइंग 100। इज इट अग्रीइंग टू दिस बीइंग लेस देन 80? यस। तो बोलेगा ये चलेगा। उसको बताना पड़ेगा बॉस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये प्रोडक्शन है। अगर ये प्रोडक्शन है, and if we are not going to allow negatives, so we need to add something extra called the non-negativity constraint. Non-negativity constraint क्या बोलता है? ये बोलता है कि तू जो भी प्रोड्यूस करेगा ना, इस दायरे में तो रहना पड़ेगा, पर कम रखने के लिए नेगेटिव में मत चला जा, क्योंकि इस हिसाब से नेगेटिव भी अलाउड है, पर तू नेगेटिव बना मत दे। एंड दैट इज वेयर वी से दैट x एंड y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई कोई लोग इसको अलग भी लिखते हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट्स अप टू यू, दोनों मत लिख देना। एंड दिस कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड द नॉन नेगेटिविटी constraint. And this is a linear programming problem. उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नंबर टू, आपके कंस्ट्रेंट्स। एंड नंबर थ्री, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी लिखा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते नहीं है, पर नॉन नेगेटिविटी नहीं लिखा तो मार्क्स डेफिनेटली कटते, 100% कटेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? Obviously, next question onward, we are not going to go into so much depth and detail. So start writing this down. If at all there is any question that you have, feel free to ask.
This is the best I can do for now. I hope this helps. Chalo, very swiftly moving on to the next question. There's not going to be any revision happening today. This is the next question. What I want is I'm going to give you, let's say, 2 to 3 minutes. I want you to try the formulation and then I will take over. Begin, please. Step 1 of a single read. A carpenter has 90, 80, and 50 running feet of teak, plywood, and rosewood respectively. Product A requires 2, 1, and 1 running feet, and product B requires 1, 2, and 1 running feet of teak, plywood, and rosewood respectively. If A would sell at rupees 48 per unit and B would sell at rupees 40 per unit, how much of each should we make and sell in order to obtain a maximum income out of this stock of wood? Form a linear programming problem and hence solve it graphically. Correct? So we have to create a linear programming problem. मैंने दो चीजें पढ़ी. Number 1, you are planning to make, as a carpenter, you are planning to make product A and product B. Can I say they are my variables then? तो ये हुआ A and ये हुआ B. और ये प्रोडक्शन कौन लिमिट कर रहा है? 3 रिसोर्सेज, टीक, रोजवुड एंड प्लाईवुड. सो टीक, प्लाईवुड एंड rosewood. Correct? And that's A and B. Product A requires 2, 1, 1. तो A को 2, 1, 1 की जरूरत है. Product B requires 1, 2, 1. What is the maximum availability? वो उन्होंने स्टार्ट में दी थी. तो the max available was given to you at the beginning, and that was 90, 80 and 50. What are you going to sell it at? तो can I say profit नहीं दिया है, sales दिया है, but can I say profit हो या sales हो, maximize ही करोगे ना. A is sold at rupees 48 and B is sold at rupees 40. Done. Now I'm not writing the details, but I want you to write the details, and that is, let us produce X units of A and Y units of B. Correct? Once you say X units of A and Y units of B, आप X और Y में लिखे हो, great. I'm going to write this slightly differently. Why? I'll tell you that later. What you can also do is, instead of saying X and Y, you can also say, let us produce X1 units of A and X2 units of B. So A will be represented with X1 and B will be represented with X2. देखो ऑब्जेक्टिव वही है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? इज टू मैक्सिमाइज z which is my profit. And what is the profit? I want to maximize z, which is 48x1 plus 40x2. Correct? But this is subject to constraints. और आप पूरा डिटेल में लिख देना. I don't want to waste time doing that. What are the constraints? Constraint number 1, 2x1 plus 1x2 या only x2 होगा. This is a maximum of 90. What do you mean by maximum of 90? 90 से ज्यादा मत मांगना. 90 से कम यूज कर सकते हो, no problem. 90 से ज्यादा अलाउड नहीं है. The total should be less than or equal to 90, and write down that this is the teak wood availability constraint. Then you will have x1 plus 2x2 should be less than or equal to 80, and that is going to be number 2, and that is the plywood availability constraint. And lastly, x1 plus x2 is less than or equal to 50, and that is the rosewood availability constraint. तीन हो गया. उसके बाद आएगा the non-negativity constraint. What is the non-negativity constraint going to be? That x1 should be greater than or equal to 0 and x2 should also be greater than or equal to 0, a non-negativity constraint.
So 3 parts: objective function, constraints and non-negativity constraint होना चाहिए. This is that kind of a question जिसमें 3 constraint थे. चल जाएंगे. Is this clear? We all have this? Yes. Great. Online, if anybody does not have it, I'm giving you, let's say, 2 to 3 minutes. Very quickly write that down for me. And then we'll continue. Yes, जैसे, and that is why I did x1, x2. Now some students also write y1, y2. वो भी चलेगा. You can assume any variable that you want. Sir, मी x2 च्या ऐवजी y घेतलं. चालेल, no problem. पुढे ते थोडासा प्रॉब्लेम होतो. जेव्हा होईल तेव्हा मी सांगेन काय प्रॉब्लेम आहे. सेंट्रल लाइन पे मुलुंड पे हो गया आर्य. अच्छा, you're talking about right now. अच्छा, give me 1 minute. This is the next question. Again, I'm giving you 2 minutes. I want you to very quickly try it for me and then I will take over. Begin, please. A firm makes CDs and DVDs to be sold in boxes of 10. The profit is rupees 20 per box of CDs and rupees 30 per box of DVDs. So a profit is directly given to us. Both products are processed on 3 machines, M1, M2 and M3. The time required in hours by each product and the total time available in hours each week is given in the table below. So if you notice what they've done in a table, इस टेबल में उन्होंने सब कुछ लिख के दे दिया है. तो डू यू रियलाइज दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसका टेबल हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. बट नाउ व्हेन अ टेबल इज गिवन टू यू ना, आई हैव अ रिक्वेस्ट, बी वेरी केयरफुल. कभी कभी ना टेबल घुमा के देते. घुमा के मतलब, अब यहाँ पे इफ यू नोटिस उन्होंने प्रॉफिट्स लिखे ही नहीं है. कभी कभी क्या करते हैं पता है, दे गिव यू अ टेबल बट दैट टेबल इज रिवर्स्ड. यहां पे M1, M2, M3 लिख देते हैं, यहां पे बॉक्स ऑफ सीडीज एंड बॉक्स ऑफ डीवीडीज लिख देते हैं. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि ये टेबल में कैसा क्या लिखा है. तो हमें क्या चाहिए, द वेरिएबल्स नीड टू बी रिटन हॉरिजॉन्टली एंड द कंस्ट्रेंट्स शुड बी रिटन वर्टिकली. तो यहां पे अवेलेबिलिटी दिखनी चाहिए और यहां पे प्रॉफिट्स. उल्टा होगा तो समझ जाना कि टेबल घुमाने की जरूरत पड़ेगी. Is this clear to everyone? So what do? We begin with directly giving them variables. So can I say let us make X units of CDs and Y units of DVDs. So my objective is to maximize Z, which is my profit. And what is going to be my profit? 20 per CD and 30 per DVD. And this is subject to constraints. Constraint number 1. 3x plus 3y should always be less than equal to 36. This is my machine 1 availability constraint. Then I will have a 5x plus 2y is less than or equal to 50. This is a machine 2 availability constraint. And 2x plus 6y is less than or equal to 60. This is a machine 3 availability constraint where x and y is always greater than or equal to 0. Is this clear to everyone? 100%? Online, does everybody have this? Anybody has any questions? Now would be a good time to ask.
Great. Now that that is done, let's quickly move on. Question number 12. Same drill. You will do it for me. And then I will repeat it for you. Let's begin. A company can produce two products, X and Y. So can I say X and Y are my variables? अब इस प्रोडक्शन को लिमिट कौन कर रहा है? Each product has to go through three machines ABC. So can I say ABC पे जो available time है will be my limitations. Machine A can be operated for a total of 12 hours. So can I say maximum availability दे दी है? A की 12 hours है. It takes 1 hour for each item X and Y. तो A 1 hour लेता है X के लिए and 1 hour Y के लिए. Machine B can be operated for a total time of 50 hours and it takes 5 hours for X and 2 hours for Y. Machine C can be operated for 60 hours. It takes 2 hours for X and 6 hours for Y. So 60 hours, 2 hours for X and 6 hours for Y. Done? The profit per article. A profit चाहिए तो directly लिख दो या leave a line and write down, or you can just say profit is rupees 50 for X and 100 for Y. Done? We are then going to go ahead with X and Y. Let's start formulating. Objective is to maximize the profit Z, which is 50X plus 100Y. This maximization is subject to constraints, and constraint number 1 is X plus Y should be less than or equal to 12. This is the machine A availability constraint. 5X plus 2Y is less than or equal to 50, which is the machine B availability constraint. And lastly, 2X plus 6Y is less than or equal to 60 is the machine C availability constraint, where X and Y will always be greater than or equal to 0. This is the non-negativity constraint. This should be your formulation. Everybody has this? Great. So without wasting any more time further, very quickly, question number 13. Now that you are getting seasoned with it, we will in a bit include a few more difficulties. This is the solution to 11. Whoever wants to take a screen grab, please make it quick. Very quickly moving on. Again, not giving you too much time, 2 to 3 minutes. Very quickly finish this for me, please. On the board, everyone. A cracker manufacturer produces two types of crackers, rockets and bombs, packed in boxes of 100 into factories. Factory 1 performs the basic assembly operation. Factory 2 performs the finishing operations. For financial reason, Factory 1 has only 180 hours available per week and Factory 2 has 120 hours available. Factory 1 needs 3 hours on each box of rockets and 10 hours on each box of bombs. Factory 2 needs 6 hours on box of rockets and 4 hours on box of bombs. If the profit of the company is rupees 45 per box and rupees 55 per box of bombs, find out how many boxes of rockets and bombs should be manufactured. Now, one confusion students have is packed in hundreds बोलते हैं ना यहाँ पे, तो now they get confused कि sir how do we consider this? देखो वो तो नाम के लिए बोला है कि 100 डाले हमने एक बॉक्स में, पर पूरा डेटा पर बॉक्स के हिसाब से ही दिया ना. Then you are going to write this down per box, and this is where your writing comes in very important. So this is where we will say let the company produce X packets of rockets and Y packets of bombs. That is what you're going to do. So what are you producing?
rockets and bombs. To produce these rockets and bombs, what do you require? Two factories, factory 1 and factory 2. Correct? Factory 1 performs the basic assembly operation, factory 2 performs the finishing operations. For financial reason, factory 1 only has 180 hours available. So can I say max kya hai mere paas? 180, and 2 has a max of 120. Factory 1 needs 3 hours for each box of rockets and 4 hours for each box of bombs, while factory 2 needs 6 hours for rockets and 4 hours for the bomb. The profit per box of rocket is 45 and that of bomb is 55. Let the factory produce X units of rockets and Y units of bombs. Then I will say my objective is to maximize. Now see, I am writing things in short to not waste time, but आप पूरा लिख देना. Let the factory produce X boxes of rockets and Y boxes of bombs. The objective function is to maximize Z, which is 45X plus 55Y, and this maximization is subject to constraint number 1, 3X plus 4Y should always be, what is 10? Factory 1 bomb is 10. 3 hours and, oh sorry, मैंने नीचे का copy किया. Sorry, this is 3 and 10, correct? 3x plus 10y is less than or equal to 180 and 6x plus 4y is less than or equal to 120, where x and y is always greater than or equal to 0. So factory 1 availability constraint, factory 2 availability constraint, non-negativity constraint. Is that clear, everyone? Sure? I think this is one of the last basic questions that I have in this type, and after that we will enter slightly different questions. So very quickly, I want you to write this down for me. Try this, giving you a few minutes, and I will then give you the solution. A factory uses 3 different resources, manufacture 2 different products, 20 units of resource A, 12 units of resource B, and 16 of resource C are available. So can you tell me ABC kya hai? Am I producing ABC? ABC are my constraints. These are the resources that I require to manufacture 2 products. वो 2 product क्या है वो बताया नहीं है. 1 unit of the first product, they're calling it first product. ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, तो we'll also call it first product, and we'll call this second product. 3 resource की जरूरत है, ABC. They have given you the maximum availability, that is 20, 12 and 16. 1 unit of the first product requires 2 units of A, 2 units of B, and 4 units of C. And the second product requires 4 units of A, 2 units of B, and no C. So can I say 0 C? इसके लिए C की requirement नहीं है. It is known that the first product gives a profit of. So a profit of rupees 2 and a profit of rupees 3. Formulate the LPP. How many units of each product should be manufactured to maximize the profit? Done. Objective is to maximize profit, that is Z, which is, you can say, let's call the first product, let's produce X units of the first product and Y units of the second product. So my Z is 2X plus 3Y. And this maximization is subject to constraints. And the constraint number 1 is 2x plus 4y should always be less than or equal to 20. 2x plus 2y is less than or equal to 12. 4x plus 0y is less than or equal to 16, where x and y is always greater than or equal to 0. Correct? Now, a lot of students ask, sir, is the simplification required? Because 2 common है, 4 common है.
नॉट रिक्वायर्ड, वो सॉल्विंग के लिए करता है, यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, दिस इज वेयर यू विल लीव इट एट, बट डिटेल में लिख देना सब प्लीज। दिस इज वट एवर 3 रिसोर्सेज बोला उन्होंने, क्या बोला है, 3 resources. So I will call it resource A constraint, resource B availability constraint, resource C non-negativity constraint, and this is your objective function. Is this clear, everyone? So anybody who wants to take a screen grab, please go ahead and do that. Done. I want to stop here and come to, सिर्फ ये नहीं करता एलपीपी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में मदद नहीं करता, कुछ और भी करता है, दैट इज कॉस्ट मिनिमाइज करने में। अब वो कैसे करता है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल एंड देन वी विल मूव ऑन। करेक्ट, मुझे बिल्डिंग बांधनी है, बिल्डिंग बांधने के लिए सीमेंट और कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। करेक्ट, मुझे बताओ, ब्रिक्स एंड कंक्रीट और सीमेंट, लेट्स से आर द 2 रिसोर्सेज। करेक्ट, ब्रिक्स ऑन कंक्रीट ज्यादा यूज करूंगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, या कम यूज करूंगा तो स्ट्रांग होगी? ऑब्वियसली द थिकर द वॉल्स द बेटर द वॉल्स। तो जितना गर्थ मेरे वॉल्स का ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा ब्रिक लेंथ होगी, जितनी ज्यादा ब्रिक स्पेस होगी, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा बिल्डिंग। इजंट दैट राइट? यस। तो लगा देते हैं ना, अगर एक कोई, मुझे एक ही वॉल बांधना है, लेट्स से एक मेरे पीछे जो स्पेस है इतना बोर्ड का, इतना वॉल बांधना है, लगा देते हैं, 1 लाख ब्रिक्स डाल देते हैं और 100 टन कंक्रीट पोर कर देते हैं, एकदम स्ट्रांग वॉल बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो वाई यू नॉटिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? खर्चा बहुत ज्यादा हो जाए। तो डू यू रियलाइज, अब ये रिसोर्स अवेलेबल है क्या? जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल, अब भी कॉल कर, जितनी चाहिए उतनी ब्रिक्स मांग ले। बट प्रॉब्लम ये है ना, तो जितनी ज्यादा ब्रिक्स मांगेगा ना, उतना ज्यादा खर्चा होगा। एंड दिस इज वेयर एलपीपी ऑल्सो हेल्प्स अस इन अ रिवर्स मैनर। मैक्सिमाइजेशन में क्या हो रहा था, देखो, प्रॉफिट बोल रहा था ज्यादा बना, कंस्ट्रेंट्स बोल रहे थे कम रख, अवेलेबल है नहीं अपने लिए रिसोर्सेस। मिनिमाइजेशन क्या बोलता है पता है? कम बना। कम बना मतलब यू यू स्मोक्ड एंड यू सेड नहीं सर, ज्यादा ही ईट और कंक्रीट हो जाएगा, मत ही लगाओ ना, फिर मत डालो ईट कंक्रीट। बोले सर बिल्डिंग बनेगी कैसे? तो लगाना तो पड़ेगा ना। तो आपका कॉस्ट बोल रहा है जितना कम रख सके उतना अच्छा है, बट स्ट्रेंथ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, उसके लिए जितना ज्यादा डाल सको उतना अच्छा है। तो डू यू नोटिस यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको ऊपर पुश कर रहा था, बट कंस्ट्रेंट्स नीचे पुश कर रहे थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे आपका कंस्ट्रेंट ऊपर पुश कर रहा है, ज्यादा यूज कर, जितना ज्यादा यूज करेगा ना उतना अच्छा, पर कॉस्ट क्या कर रही है, नीचे पुश कर रही है। एंड दैट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो like a maximization problem, there is a minimization problem. What is a minimization problem? Let's take a look at a very typical, a very basic minimization objective problem. What does the question say? A diet for a growing child must contain at least 4,000 units of vitamins, 50 units of minerals and 1,400 calories. तो क्या है, आपको एक ग्रोइंग चाइल्ड को डाइट देनी है। उस डाइट में ना कम से कम 4,000 यूनिट्स के विटामिन होने चाहिए, 50 यूनिट्स के मिनरल्स होने चाहिए एंड 1,400 कैलोरीज होनी चाहिए। 2 foods A and B are available to meet this. तो अगर आपको ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो 2 फूड्स हैं, ये 2 फूड्स यूज कर सकते हो। फूड ए कंटेन्स 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन, मतलब 1 यूनिट दोगे ना तो 200 यूनिट विटामिन मिल जाएंगे। मतलब लेट्स से ये वी आर टॉकिंग अबाउट ये सम एडेड फूड है, लेट्स से सेरेलैक। तो सेरेलैक का 1 चम्मच दोगे ना तो 200 यूनिट मिलेगा, पर आपको तो कितना चाहिए, 4,000। तो कह रहे से उतने ज्यादा चम्मच ऐड करने पड़ेंगे। 1 चम्मच में ना यू हैव 1 यूनिट ऑफ मिनरल्स एंड उस 1 चम्मच में यू हैव 40 कैलोरीज। और वही प्रोवाइड करने के लिए बी भी है। अब बी क्या है? बी इज एन एनर्जी ड्रिंक। या आप सॉलिड फूड दे रहे हो, देयर इज एन एनर्जी ड्रिंक, मिल्क में मिक्स करके दे सकते हो। उसमें 1 चम्मच में 100 यूनिट विटामिन है
2 यूनिट मिनरल है एंड 40 कैलोरीज है। अब मुझे क्या करना है, ए और बी का खर्चा है। खर्चा है मतलब देखो 4000 यूनिट है ना रिक्वायरमेंट आपकी, इसके एक स्पून से 200 यूनिट मिल जाती है, दे देना। 25 स्पून ठूस दे, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बेबी विल बी वेरी 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 स्ट्रांग। पर फिर एक दिन में दोनों जार खत्म कर देगा तो कैसे चलेगा? देर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, आई एग्री, कम से कम इतना होना चाहिए। और वो रिक्वायरमेंट रीच करने के लिए डजंट मीन तू कितना भी ज्यादा दे दे, कॉस्ट है उसकी। एवरी यूनिट ऑफ ए कॉस्ट 70 रुपीज एंड बी कॉस्ट 80 रुपीज। कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम टू मिनिमाइज कॉस्ट। अब यहां पे भी देर आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स? भाई कितना ए दू, कितना बी दू बच्चे को। तो ए एंड बी आर अगेन माई वेरिएबल्स, बट ये वेरिएबल्स जो है ये कितना जाएगा विल डिपेंड ऑन मुझे कितना विटामिन मिनरल्स एंड कैलोरीज की जरूरत है। सो कैन आई से माई विटामिन रिक्वायरमेंट, माई मिनरल रिक्वायरमेंट एंड माई कैलोरी रिक्वायरमेंट विल डिसाइड कौन कितना होगा। तो आई विल से कि यहां वी विल हैव हाउ मेनी, वी विल हैव अ vitamin requirement, we will have a mineral requirement, and we will have a calorie requirement. Now the difference here is जब हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी थी ना, तो इन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी रिसोर्स की मैक्सिमम होती है। इन अ कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आपके रिसोर्स की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? ज्यादा देना है दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 4000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो 4000 ही देगा, 4000 से ज्यादा भी हो सकती है, पर कम से कम कितनी होनी चाहिए? 4000। सो द मिनिमम required, not the maximum available. The minimum required is 4000 units of vitamins, 50 units of minerals, and 1400 calories. Two foods A and B are available. A contains 200 units of vitamins, 1 mineral, and 40 calories. 200, 1, and 40. B contains 100 units of vitamins, 2 minerals, and 40 calories. अब इनका आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, कॉस्ट दिया है. The cost per unit A is 70 and B is 80. Step 1, and I'm writing this in a different script. Let us produce, or let us use Y1 units of A and Y2 units of B. Correct? So we will say, let us use Y1 units of A and Y2 units of B. हो गया? अब वहां पे ऑब्जेक्टिव वाज टू मैक्सिमाइज, मैं जितना ज्यादा प्रॉफिट रख सकूं उतना अच्छा। अब कॉस्ट क्या करूंगा? ऊपर रखूंगा या नीचे? द लोअर द बेटर. देन कैन आई से माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू minimize cost Z, and that is 70 Y1 plus 80 Y2. हाँ, मिनिमाइज करना है तो दो ही मत ना, खिलावे मत बच्चे को, बेस्ट है। ऐसा नहीं कर सकते, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, प्रोटीन्स, विटामिन एंड विटामिन, मिनरल्स एंड कैलोरीज की। तो वी विल से दिस मिनिमाइजेशन इज सब्जेक्ट टू constraints. And what are the constraints? Constraint number 1, 200 Y1 plus 100 Y2 should be 4000. 200 Y1 plus 100 Y2 should be 4000. 1 Y1 plus 2 Y2 should be 50. And lastly, 40, 40, 1400. 40 Y1 plus 40 Y2 should be 1400. now देखो, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी तब क्या था? ये ज्यादा से ज्यादा है मेरे पास, इससे ज्यादा मांगना मत, कम मांग सकता हूं हाँ। वैसे ही ना,
when you say minimum required, जैसे if you tell your parents कि कल मेरा एग्जाम है और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए, खाना भी, और ट्रैवल अगर थोड़ा ट्रेन वेन में कर दिया होगा तो आई माइट टेक अ रिक्शा, तो मुझे 500 रुपए तो दे देना कम से कम। और उन्होंने 500 रुपया दे दिया कम से कम, अगर आपने बोल दिया उन्होंने 1000 दिया तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं नहीं, 1000 क्यों, नहीं चाहिए, बोलोगे क्या ऐसा चलेगा ना, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट 4000 की है, 4000 से ज्यादा नहीं बोलेगा क्या बच्चा, नहीं, इज अ गुड थिंग, 4000 से कम नहीं चलेगा। तो ये जो टोटल न्यूट्रिशन दोगे ना आप बच्चे को, यू विल मेक श्योर दैट दिस टोटल न्यूट्रिशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000। 4000 चलेगा, 4000 से ज्यादा चलेगा, 4000 से कम नहीं चलेगा। Similarly, this should also be greater than or equal to 50, and this should also be greater than or equal to 1400. So wherever there is a maximum availability, the constraint should be less. Wherever there is a minimum requirement, the constraint can be more. And here we write down which is the minimum. Vitamin था ना ये, vitamin requirement constraint. This is the minimum. Minerals requirement constraint, and this is the minimum calories requirement constraint. Obviously, कुछ भी हो जाए, whether it is a minimization or a maximization problem, मेरा y1 और y2 क्या नहीं हो सकता, negative नहीं हो सकता. So we will say that y1 is always greater than or equal to 0, y is always greater than or equal to 0, called the non-negativity. Done. That's it. This is a minimization problem, and this is it. These are the two kinds of LPPs that you will see. You will see a minimization problem and you will see a maximization problem. Very quickly, start writing down. Any questions you have in the time being, ask. Now, this is the minimization problem. Again, I would like you to try a few minimization problems, and then we will move on to slightly complex problems. So that covers the horizon of LPP. This is the question, giving you a few minutes to try, after which I will take over. On the board, everyone. Two different kinds of foods, A and B, are considered for a weekly diet. The minimum weekly requirement of fats, carbohydrates, and proteins are 18, 24, and 16 units respectively. 1 kg of food A has 4, 16, and 8 units respectively of these ingredients, and 1 kg of food B has 12, 4, and 6 units respectively of these ingredients. The price of food A is 4 per kg and that of food B is 3 per kg. Construct the problem to minimize cost. So what is it that we want to kind of provide? A and B. That has limitations on fats, carbohydrates, and proteins. So can I say A, B, fats, carbs, and proteins? There is a minimum weekly requirement. So can I say there is a minimum required of 18, 24, and 16. 1 kg of food A has 4, 16, and 8 units respectively. So 1 unit of A has 4, 16, and 8, while that of B has 12, 4, and 6. Correct? The cost is 4 per kg of A and 3 per kg of B. Cost is 4 and
3. We will begin with, which I'm not writing in detail anymore. We are going to say, and whatever you can use, you can say, let us use x units of a, y units of b, x1 units of a, x1 unit, x2 units of b, y1 units of a, y2 units of b, whatever it is that you find comfortable, x and y. Step 1, what is the objective? The objective is to minimize. So objective function will be to minimize z, and the minimization is 4x plus 3y is my objective. This objective is subject to constraints. Constraint number 1 is 4x plus 12y. Minimum required is 18. Should always be greater than or equal to 18. Why? कम से कम 18 होना चाहिए ना. 18 से ज़्यादा works. 18 से कम no. Then 16x plus 4y should be greater than or equal to 24, and 8x plus 6y should be greater than or equal to 16, where x and y is always greater than or equal to 0. This is my formulation. Do you all have this? Great. Anybody who doesn't have it, I'm giving you a minute or two for you to get it, and then we will move on to the next question. So, moving on to the next. Again, I want you to try it. Give you a minute or two, and then I will take over. Continue. A chef is planning a new cocktail for a party, which is to be made using 3 basic ingredients, A, B, and C, so that it has at least 10 liters of A, 12 liters of B, and 20 liters of C. He makes this cocktail by mixing 2 compounds, compound 1 and 2. Each unit of compound 1 has 4 liters of A, 3 liters of B, and no C. Each unit of compound 2 has 1 liter of A, 2 liters of B, and 4 liters of C. The unit cost of the compounds 1 and 2 are rupees 400 and rupees 600 respectively. Formulate the problem to minimize the cost. So you have to minimize cost. किसका cost? 1 and 2 का ना? अगर cost 1 and 2 का है, तो 1 and 2 are my variables. ये 2 वेरिएबल्स यूज करने में कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? ए, बी एंड सी, क्योंकि उनपे एक मिनिमम की रिक्वायरमेंट है. एटलीस्ट मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट. ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है? देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 12 liters, 10 liters of A, 12 liters of B, and 20 liters of C. He makes this cocktail by mixing 2 compounds 1 and 2. Each unit of compound 1 has 4 liters of A, 3 liters of B, and no C. And compound 2 has 1 liter of A, 2 liters of B, and 4 liters of C. The unit cost of compounds 1 and 2 are 400 and 600 respectively. So आपको cost दिए and rupees 600. I will say, let us use x units of A and y units of B. So my objective is to minimize. Minimize what? Cost. And that is 400x plus 600y. And this minimization is subject to constraints. Constraint number 1, 4x plus y should be greater than or equal to 10, क्योंकि कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा. This is the compound A constraint. Then there is 3x plus 2y should be greater than or equal to 12.
B minimum requirement constraint, and 0x. So no x, 4y should be greater than or equal to 20. Compound C constraint where x and y is always greater than or equal to 0. Everybody has this? Fantastic. Leaving this on for a minute for anybody who wants to write down any bit. If not, we can then move on. I hope everybody is done. Has been asked once in the new syllabus. Chalo. Again, giving you a few minutes. I want to try this for me. A company produces two types of dog food, F1 and F2. They cost rupees 50 and 30 per unit. So can I say F1 and F2 का cost दिया है? So F1 and F2 become my variables. Each type of food contains two types of nutrients, N1 and N2. Obviously, N1 and N2 will become your constraints क्योंकि इस पे कोई ना कोई limitations होंगी. इतना N1 होना ही चाहिए, इतना N2 होना ही चाहिए. Each unit of F1 contains 2 units of N1 and 4 units of N2, while each unit of F2 contains 3 units of N1 and 2 units of N2. The minimum daily requirement of N1 and N2 are 6 units and 8 units respectively. The cost given to you is rupees 50 and rupees 30. Let there be X units of F1 and Y units of F2. My objective is to minimize Z, which is 50X plus 30Y. This minimization is subject to constraints. Constraint number 1, 2X plus 3Y should always be greater than or equal to 6. 4X plus 2Y should always be greater than or equal to 8, where X and Y is always greater than or equal to 0. Does everybody have it? Anybody needs time? Take 2 minutes if you want to write down or take a screen grab, but make it quick because I want to move on to the next question ASAP. We've done 12, right? We're almost done. If you have understood what a minimization and maximization problem looks like, can we do questions that have a little bit of a difference here and there? Is that okay? Great. Then let me introduce a random question to you in which पहले तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है और फिर उस हिसाब से फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा. So the first question that I want to do is in that type 7. कर लो, and then if you are able to identify what is different in it, great. If you're not able to, as always, I will do it for you. Quick. On the board, everyone. Let me tell you what are the different things about this. A company manufactures 3 types of bags: small, medium, and big. Raw materials and labor available per week are 100 units and 70 hours. Respectively, S requires 2 units of raw material, 6 hours of labor. M requires 4 units of raw material, 5 hours of labor, whereas B requires 7 units of material and 3 hours of labor. It is observed that, however they are tried, the total number of bags produced per week
does not exceed 75. Formulate the problem to maximize profit. If the profit for the small bag is rupees 50, big is medium is 60 and big is 90. तो मुझे बताओ प्रॉफिट किसका दिया? बैग्स का. 3 टाइप की बैग्स हैं एंड दिस इज द फर्स्ट चेंज. अब तक हम जो कर रहे थे वहां पे 2 वेरिएबल्स थे, यहां पे 3 है, स्मॉल, मीडियम एंड बिग. करेक्ट. अब ये बैग्स प्रोड्यूस करना है और इस प्रोडक्शन में कौन इंपेडिमेंट्स है और या फिर कौन कंस्ट्रेंट कर रहा है इनको? वन इज रॉ मटेरियल एंड द अदर इज लेबर. तो यहां आएगा रॉ मटेरियल और यहां आएगा लेबर. देयर इज अ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी. ऑब्वियसली, like I told you, this is a maximization problem. So there will be an upper limit to the availability. There is 100 units of raw material available and 70 hours of labor. S requires 2 units of raw material, 6 hours of labor. M requires 4 units of raw material, 5 hours of labor. B requires 7 units of raw material and 3 hours of labor. What is the profit per bag? This is 50, 60 and 90. Now the first step. Now wherever students asked me, sir x and y ले रहे थे, चलेगा ना? चलेगा. But अब थर्ड वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? z लेना पड़ेगा? मत लेना. क्यों? अलाउड नहीं है? ऐसे नहीं है कि अलाउड नहीं है, बट इन एलपीपी आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इन द एंटायर वर्ल्ड ग्लोबली, उसको z बुलाया जाता है. Your objective function is always called z. And that is why we try to not use z in this. So what do we try to say? We here try to use x1, x2 and x3. So let us produce x1 units of the small, x2 units of the medium and x3 units of the big bag. That is going to be our declaration. Next, what do we write? The objective function. So the objective is to maximize z, which is 50x1 plus 60x2 plus 90x3, and this maximization is subject to constraints. 2x1 plus 4x2 plus 7x3 and the maximum availability, so should be less than or equal to 100. Does everybody understand this now? 6x1 plus 5x2 plus 3x3 should be less than or equal to 70. And lastly, x1, x2 and x3 should always be greater than or equal to 0. Without fail, make sure you write down. This is the raw material availability constraint. This is the labor time availability constraint and non-negativity constraint. Is that right? Yes? Great. We missed out on one information. And this is what we call a non-table constraint. Now, what do you mean by a non-table constraint? ऐसा constraint जो resources पे नहीं है. Do you notice here 75 is not a resource constraint? 75 क्या बोलता है? It is observed that however they tried, the total number of bags produced per week does not exceed 75. तो पहले तो ये समझ लेते हैं और you tell me this, ये किसी रिसोर्स का लिमिटेशन है क्या? नहीं, ये नंबर पे लिमिटेशन है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इफ वी गो आउट शॉपिंग या फिर ग्रोसरी शॉपिंग, स्कूटी लेके गए, ठीक है, खरीद सकते कुछ भी खरीद सकते हो. ये पैसा है, मनी इज द क्राइटेरिया. कहते कितना पैसा है, इतने में ही मैनेज करना पड़ेगा. व्हाट इफ आई इवेंचुअली टेल यू, देख मेरे पैर में ना 2 थैलियां बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चलेगा. Isn't that a number of quantity constraint more than a resource constraint? And a quantity constraint cannot be put in a table. वो resource नहीं है ना? Then we have to analyze it separately. So everybody understands what a non-table constraint is? अब ये constraint किस पे है? Number पे. किसके number पे? Small, medium and big bags के number पे. मुझे बताओ, क्या बोल रहे हैं वो? कुछ भी कर लेना. Total production 75 exceed नहीं कर सकता. किसका 75? स्मॉल बैग्स का.
मीडियम का या बिग का? किसका 75? तीनों का। कैन यू टेल मी, फिलहाल हम कितना प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं? व्हाट आर वी डिसाइडिंग टू प्रोड्यूस? X1, X2 एंड X3। तो मेरा टोटल क्या होगा? इजंट माई टोटल X1 प्लस X2 प्लस X3? ये टोटल क्या हो सकता है? 75 से कम, ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 75 को एक्सीड नहीं कर सकता। सो द टोटल क्वांटिटी दैट आई प्रोड्यूस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 75, एंड दिस इज टोटल क्वांटिटी कंस्ट्रेंट. And then we come to the non-negativity, where x1, x2, and x3 is always greater than or equal to 0. Is this clear to everyone? Is the 75 number understood? ये जब क्वांटिटी पे कंस्ट्रेंट होता है ना, कि मैं ये सब लिख दूं और मैं बोल दूं कि देख मार्केट ऐसा है ना कि बिग बैग्स 25 से ज्यादा बिकती नहीं है, तो कहना से ये रिसोर्स पे कंस्ट्रेंट नहीं है, टोटल बिग बैग्स बिकती 25 है, तो कहना से फिर जो बिग बैग्स बना रहा हूं मैं विच इज X3, ये 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो कहना से इसको अलग से मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां लिखा है वैसे लिख दूंगा, X3 शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 25, क्योंकि X3 25 से ज्यादा बनाओगे ये सब अग्री हो जाएगा, बट फिर 25 से ज्यादा बिकेंगी ही नहीं, तो बनाने में पॉइंट नहीं है. बट ऐसा कोई फिलहाल तो कंस्ट्रेंट नहीं है. देयर इज अ क्वेश्चन वेयर आई पुट दैट काइंड ऑफ अ कंस्ट्रेंट, बट हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? Great, write that down for me. And now we will do such slightly off questions. That was one question. That was three
वेरिएबल्स सर 75 के बाजू में लिखना क्या है? टोटल क्वांटिटी कंस्ट्रेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ बैग्स कंस्ट्रेंट? टोटल पे लिमिटेशन है ना वो, तो टोटल क्वांटिटी कंस्ट्रेंट या टोटल नंबर ऑफ बैग्स कंस्ट्रेंट लिख सकते हो. डन. Now on similar lines, this question has nothing much in it, but it's a three variable question. So that is what is different about it. It's not a two variable question. Rest there isn't much to do. So फटाफट हो जाएगा. बस टेबल उन्होंने दिया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा. So giving you a few minutes very quickly, do this for me. So like I said, there wasn't much to do in this question because very little that this question has anyway. A company produces three types of toys for children: pianos, keyboards, and accordions, with costs 60, 80, and 40. They use three resources ABC for the production. As per the contract with the supplier of the resources, the company is required to utilize at least 30 units, 40 units, and 50 units of these resources per month. Formulate the problem to minimize the cost. So, you are making three products, जिनका cost आपको दिया है, and that is pianos, keyboards, and accordions. और ये तीनों बनाने के लिए you need three types of resources, which is A, B, and C. करेक्ट. द रूल इज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ है ना कि आपको कम से कम इतना यूज करना पड़ेगा. ज्यादा कितना भी मांगो दे दूंगा, कम से कम इतना लेना पड़ेगा. तो कहना इसे इट इज नॉट अ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. इतना तो होना ही चाहिए, 30, 40 एंड 50. A piano requires 5, 4, and 3 units of ABC, 5, 4, 3. A keyboard requires 6, 7, and 5 units of ABC, and an accordion requires 3, 2, and 2 units of ABC. Correct? The costs are given to you. Costs are 60, 80, and 40. Done. X1, X2, X3. You will start with. You want to minimize the cost Z, 60x1, 80x2, 40x3. This minimization is subject to constraints 5x1, 6x2, 3x3, and this should be greater than or equal to 30 क्योंकि कम से कम 30 यूनिट्स यूज करना ही पड़ेगा. 4x1 plus 7x2 plus 2x3 should be greater than or equal to 40. 3x1 plus 5x2 plus 2x3 should be greater than or equal to 50, where x1, x2, and x3 should always be greater than or equal to 0. That's it. Do you all have this? Everyone does? Great, fantastic. So it's a basic minimization question. Let's do something very nice. Question number 1. Read properly, take your time, understand, and make it. If anybody wants a screen grab of this, please make sure you take it quickly. Question number 1. Begin. A dealer deals in two items, hard disks and pen drives.
he has 50,000 to invest and a space to store 60 pieces. One hard disk costs rupees 2,500 and one pen drive costs rupees 500. Construct the problem to maximize profit if the profit per hard disk is 1,000 and pen drive is 150. ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों चीजों का विच इज हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव्स का कॉस्ट भी दिया है एंड प्रॉफिट भी दिया है. सो द प्रॉब्लम हियर इज करूं क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं या कॉस्ट को मिनिमाइज करूं? अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो बताएंगे ना करना क्या है. उन्होंने बता दिया है, उन्होंने बोला है क्या करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, माय ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. पर एक मिनट, प्रॉफिट किसका है? ये हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव्स का. तो एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव्स. करेक्ट. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड दैट इज 1,000 एंड 150. बट एक मिनट, प्राइस भी तो दिया है, तो कॉस्ट क्यों दिया उन्होंने? बिकॉज योर कॉस्ट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, योर कॉस्ट इज अ कंस्ट्रेंट. उन्होंने क्या बोला, देख एक हार्ड डिस्क 2,500 की और एक पेन ड्राइव 500 की, पर मेरे पास टोटल कितना है? 50,000. which means the cost is a constraint. My maximum budget is 50,000, where per hard disk is 2,500 and per pen drive is 500. But you also notice उन्होंने ये टोटल पीस 60 ही स्टोर करने के लिए जगह ये लिखा है. किसका 60? पेन ड्राइव्स का 60 या हार्ड ड्राइव्स का 60? दोनों का मिला के 60. So can I say this is not something I can put in a table? This becomes a non-table constraint or a quantity constraint. So I'm going to say, let us buy X hard disks and Y pen drives. Number one, the objective is to maximize the profit, which is 1000X plus 150Y. And this maximization is subject to constraints, where constraint number one is, जो खर्चा करोगे, which is 25,000X plus 500Y. क्योंकि X हार्ड डिस्क खरीदोगे और Y पेन ड्राइव्स, ये टोटल खर्चा 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000. 50,000 मांग है मेरे पास, 50,000 से ज्यादा मत मांग. This will be your maximum investment constraint. And next, जो भी पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क उठाऊं, I need to make sure that this total should always be less than or equal to 60, क्योंकि 60 आइटम स्टोर करने से ज्यादा मेरे पास जगह नहीं है. That will become the maximum storage space constraint. And lastly, we have x1 plus x1 and x2, yeah, x and y should always be greater than or equal to 0. This is the non-negativity constraint. Do you understand this? So dekhna, just because they've given you cost does not make it a minimization problem. Cost here is a constraint.
This was one of the questions that is slightly different, where you have to analyze by yourself. I think 2 is done, 3 is done, 4 is done. 4 is done? Not done? Great. Then 4 is also not very different, slightly different, but it's a good question. Begin then, so that we can start. Chalo. What does the question say? The question says a toy manufacturer produces dolls and machine guns. तो toy manufacturer दो चीजें बनाता है, एक तो dolls बनाता है और दूसरा machine guns बनाता है. For which he requires raw material and labor. अब इस चीज के लिए उनको क्या चाहिए? Obviously raw material and labor चाहिए, other two resources. He cannot produce more than 6 dolls per day and more than 5 machine guns per day. Tell me, ये resource का limitation है क्या? नहीं, तो ये किस चीज का limitation है? This is a limitation on quantity and not on any resource. तो उसको रहने देते हैं, because we can't put this into a table. Next, he must use a minimum of 3 hours of labor per day. तो क्या बोल रहे हैं? लेबर कम से कम कितना? 3 घंटा यूज हो जाना चाहिए. The raw material available to him is almost 63 units per day. So raw material कितना है? 63 units का raw material available है. तो कहना चाहिए maximum availability है. 2 hours of labor are required to produce each doll or machine gun. 7 units of raw material is required for the doll and 9 units of raw material for the machine gun. The profit per doll is 130 rupees. The profit per machine gun is rupees 60. What do you want from me? Maximize the manufacturer's profit. So we are going to begin with number 1, and that is दो चीजें बना रहे हो, डॉल्स एंड machine guns. थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ. Dolls and machine guns. What are the resources you require for this? You require raw material and labor. So raw material and labor. Raw material आपके पास 63 units है. So can I say maximum availability of raw material is 63 units. Labor minimum 3 hours use करना पड़ेगा. तो can I say that's a minimum availability, minimum requirement criteria? तो कहने से एक ही क्वेश्चन में एक क्राइटेरिया मिनिमम का है, एक क्राइटेरिया मैक्सिमम का. तो ये गोना चेंज दिस. हम यहां नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे कि ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है और ये 3 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. इतना तो यूज करना ही पड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल a mixed constraint question. What is a mixed constraint question? Sub constraints greater than या sub constraints less than नहीं है. कुछ greater than है, कुछ less than है. So what else do we know? We know that requirement. 2 hours of labor is required for each doll. Doll labor 2 और machine gun. तो labor doll या machine gun दोनों के लिए 2 2. 7 units of material is required for the doll. 9 units of material are required for the machine gun. Correct? What they have given us is, they have given us that the profit of every doll is 130 and that of a machine gun is 60. So can I say, let me produce X units of the doll and Y units of the machine gun? So what will I have? Number 1, objective function. Objective is to maximize profit, which is 130x plus 60y. This maximization is subject to constraints. Constraint number 1,
रॉ मटेरियल की बात करोगे तो 7x प्लस 9y इज less than or equal to 63. Why? This is the maximum raw material availability. But when you talk about labor, 2x plus 2y should be greater than or equal to 3. This is the minimum labor constraint. कम से कम इतना होना चाहिए. But 1 minute. Haven't they also put a few other constraints जो हम टेबल में नहीं डाल पा रहे थे? और ये कंस्ट्रेंट ओवरऑल पे नहीं है, ये कंस्ट्रेंट इंडिपेंडेंट पे है. 6 डॉल से ज्यादा नहीं बना सकते एंड 5 गन से ज्यादा नहीं बना सकते. हम कितने डॉल्स बनाने वाले हैं? हाउ मेनी आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस? एक्स. इजंट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस? तो ये जो एक्स है ये क्या नहीं हो सकता? Greater than 6. So x has to be less than or equal to 6. The minimum number of dolls constraint, the maximum number of dolls constraint, and what can be the raw materials, guns. 5 गन से ज्यादा नहीं बना सकते. So can I say y should always be less than or equal to 5? This is the maximum number of guns constraint, where x and y is greater than or equal to 0. So very interesting question. दो चीजें. नंबर 1, इसमें सब कंस्ट्रेंट्स लेस देन या सब कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन नहीं है. एक लेस देन है तो दूसरा ग्रेटर देन है, क्योंकि एक की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है तो दूसरे की मिनिमम रिक्वायरमेंट. नंबर 2, देयर इज अ नॉन टेबल कंस्ट्रेंट या अदर दो नॉन लेबर कंस्ट्रेंट. ये नहीं है कि एक्स एंड वाई मिलके 6 से ज्यादा नहीं बना सकते. सिर्फ x 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड y 5 से ज्यादा होना नहीं चाहिए. Very well put question. Any part that you did not get, please write that down for me quickly. Shall we? Ajay, then do a few questions remaining here and there. 5 is done. Yes. 6 is done. 7 is done. 8 is done. 9 is done. 10 is done. 11 is done. 12 is done. 13 is done. 14 is not done. Done. 15 is not done. This is again an interesting question. Very quickly.
Give me 2 minutes, then I'll take over. A company manufactures two models of Spider-Man for children, Model A and Model B. To stay in business, it must produce at least 150 models of A per month. However, it does not have the facilities to produce more than 200 of that model per month. It also does not have the facilities to produce more than 150 models of B per month, while the total demand does not exceed 300 per month. If the profit is rupees 40 per model A and 30 on each model B, how many of each model should be manufactured for maximum profit? Do you notice? कोई resource नहीं है इसमें. There's absolutely no resource. All criteria is only and only on quantity of प्रोडक्शन. सिर्फ उस पर कोई भी रिसोर्स नहीं है, किसी रिसोर्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है. लिमिटेशन इज ओनली ऑन नंबर. They probably have converted resource to number, and that is how they put their criteria. So let's start. Can I say, let us produce X units of model A and Y units of model B? So if we say A and B के X and Y units रखने हैं, तो we will start with, we need to make sure that the profit is maximum. So we maximize Z, which is 40X plus 30Y. And this maximization is subject to constraints. What are the constraints? Constraint number 1 is that, नहीं देखिएगा, बाजू में लिखता हूं, चलो यहां लिख देता हूं. It must produce at least 50 models of A. A कम से कम कितना होना चाहिए? 50. बट मेरा A क्या है? X. तो X कम से कम कितना होना चाहिए? अब कम से कम मतलब 50 से कम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. 50 से ज्यादा चलेगा. एटलीस्ट 50 ना, तो X 50 से ज्यादा हो चलेगा, कम होना नहीं चाहिए. But it does not have the facilities to produce more than 200 per month. वो बोल रहे हो आप कम से कम 50 होना चाहिए, पर बेचारे के पास ना 200 से ज्यादा बनाने की रिसोर्स नहीं है. तो X 50 से तो ज्यादा होना चाहिए, बट X 200 से कम होना चाहिए. तो X should be anywhere between 50 and 200. Now this constraint is also written together. We call it as a sandwich constraint, जिसमें आप X को 50 और 200 के बीच सैंडविच कर दो. नेक्स्ट, इट ऑल्सो डज नॉट हैव द फैसिलिटीज टू प्रोड्यूस मोर देन 150 ऑफ बी पर मंथ. तो बी 150 से ज्यादा नहीं बन सकता, तो बी मतलब वाई शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 150. नेक्स्ट, while the total demand does not exceed 300. What do you mean by total demand? Can I say X plus Y? X plus Y क्या होना चाहिए? X plus Y should always be less than or equal to 300. That's it. Where X and Y are always greater than or equal to 0. अब यहाँ पे, because these are not resources, you can't really write this as a constraint. So this is minimum X constraint, minimum Spider-Man model A constraint, maximum model B constraint. This is maximum model A constraint. This is maximum total production constraint. And this is non-negativity constraint. So very good question, which is only and only on quantity, and it has nothing to do with any resource.
Shall we? That brings us to 16 is not done. Even if we skip 16 is okay. It's not. It's a very basic question. 17 is an interesting question which I want to do. 16 and 18 you all can try by yourself. There isn't much to do in those questions. 17 I want to do. Ye fatafat kar lo. This we will do as the last question and then we'll move on to the material questions and see what is there. The standard weight of a special purpose grinder has to be at least 5 kgs. तो एक स्पेशल पर्पस ग्राइंडर है जो आप यूज कर रहे हो जिसका स्टैंडर्ड वेट कम से कम 5 किलो होना चाहिए. It contains two basic ingredients B1 and B2. उसमें दो इंग्रेडिएंट है, एक B1 है दूसरा B2. B1 costs rupees 5 per kg and B2 costs rupees 8 per kg. तो B1 का cost is 5 per kg and B2 का cost is 8 rupees per kg. Strength considerations dictate that the grinder contains not more than 4 kgs of B1 and a minimum of 2 kgs of B2. Find the minimum cost of the grinder satisfying the above conditions. So grinder की cost minimize करनी है. Grinder की cost किस पे depend करती है? What does the grinder cost depend on? B1 and B2, the two values that decide its weight. तो ये कॉस्ट मुझे मिनिमाइज करनी है. बट B1 एंड B2 कोई रिसोर्स बेस्ड लिमिटेशन है क्या? एब्सोल्युटली नहीं, सिर्फ क्वांटिटी पे है. तो कहना से फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन विल बी अ नॉन टेबल क्वेश्चन. नंबर 1 कॉस्ट. सो आई विल से लेट्स कॉल B1 X and B2 Y. So I'm going to begin by saying, let us produce X units. Let us use X units of B1 and by X kgs of B1 and Y kgs of B2. Number 1, I have to minimize cost, which is कहाँ है? 5 per kg and 8 per kg. 5x plus 8y subject to number 1. The total weight should be at least 5 kg. मतलब x1 and xn y दोनों मिला के कम से कम 5 होना चाहिए. तो कहना से मोर देन और इक्वल टू 5 चलेगा. B1 costs rupees 5 per kg and B2 costs rupees 8 per kg. Strength considerations dictate that the grinder contains not more than 4 kg of B1. B1 कितना होना चाहिए? Not more than 4 kg. तो B1 which is X should not be more than 4 kg. Not be more than 4 kg मतलब less than 4 kg चलेगा, 4 kg भी चलेगा. And minimum of 2 kgs of B2. B2 कम से कम कितना होना चाहिए? तो 2 kg से ज्यादा चलेगा, 2 kg से कम नहीं चलेगा. And that's it. Where X and Y is always greater than or equal to 8. Did anybody get this? Yes? Fantastic. Great. Anybody who didn't get it, I want you to quickly write that down for me. So very quickly moving into past paper में क्या पूछा था. So what I've done is I have already hunt for the paper, and the one paper where they've asked it is the June 23 paper. So the first attempt post COVID जो नए syllabus में हुआ था. And the question asked is question number 4. What does the question say? A factory of SPON Limited manufactures 3 products which are processed through 3 different production stages. The time required to manufacture 1 unit of each of the 3 products
And the daily capacities of the stages are given in the following table. So 3 product 1 2 3, correct? Stage 1 2 3, yeah, state 1 2 3, whatever. Here they've written stage, here they've written state, whatever it is. State capacity in minutes, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. And profits दिया है. What do you want? Develop a linear programming model to determine how many products to be manufactured to maximize profit. So you don't have to solve it. You only have to develop a linear programming model. They've not asked you kitna product 1, kitna product 2, and kitna product 3. That's it. So if I give you 2 minutes, can you try the formulation ताकि ये सीली हो जाए फिर?